हाय गाइस, वेलकम बैक। फ्राइडे को मार्केट जो है एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पे आके रुका है। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की और क्या उनका स्टैंस है। Before I go on there, I am your host, Dr. Seema Jain, a SEBI registered research analyst, founder and chief mentor at StockPro, and partner with Zerodha Upstocks Fires and Nastha Trade. मैं आपको ये हर बार अपना लॉन्ग इंट्रोडक्शन देती हूँ ताकि जो नए लोग हैं वो मेरे बारे में थोड़ा सा जाने। और कहीं और जाने से पहले मैं आपको अपने चैनल पे लेके चलती हूँ। आज मैंने सुबह ही एक ट्रेड दिया था एस्ट्रा माइक्रोवेव 265, इट मेड अ हाई ऑफ 278। टाटा एलेक्साई का ट्रेड दिया था 8050 के ऊपर, इसने पूरे 400 पॉइंट दिए थे, 5% का मूव इन सच अ बिग वैल्यूड स्टॉक. It was a massive move that it gave today. Then we have given Skipper, we have given Sansera, which gave about 10 points straight up, right? Please remain connected with us on the Telegram channel where we are super live, right? उसके बाद आप मुझे YouTube पे फॉलो कर सकते हैं for some learning, because I keep making a lot of educational videos for you all, and then you can follow me on Twitter where I keep posting my graph, my research, and keep updating you about what's happening in the stock market. So let's start with Nifty and Bank Nifty. So today market, if you just notice, this is Nifty's graph. So I have always told you कि जब भी कभी बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, इट हैज अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस, राइट? उसके बाद कैसे मार्केट क्लोजिंग देता है उसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो आज मैंने आपके लिए निफ्टी का ग्राफ खोल के रखा हुआ है। आप जस्ट नोटिस करिए कि आज इसने एक तो गैप डाउन ओपनिंग दी। सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपके लिए गैप मार्क किया है, निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग की है, ठीक है? उसके बाद तो मैं आपको ये सब क्यों कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आपको, बहुत लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी मेरी नजर से भी एक बार देखिए कि मैं क्या पॉइंट्स देखती हूँ, क्या मुझे समझ में आता है और उससे मैं क्या इन्फर करती हूँ आगे वाले दिनों के लिए। आप अगर देखोगे तो परसों कल थर्सडे को निफ्टी गेन मैसिवली, राइट? परसों इसने एक बुलिश साइन दिया था, कल थर्सडे को इट मेड अ ह्यूज बुल मूव, बट टुडे आज वो सारा बुल मूव डिसअपियर हो गया। निफ्टी ओपन गैप डाउन, ये गैप डाउन था जिसपे निफ्टी खुली और यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पे अगेन बेयर्स वर सिटिंग, दे ब्रॉट इट डाउन, दे फर्दर पुल्ड इट डाउन और नीचे आज की ओपनिंग से नीचे ले जाके क्लोजिंग की है, right? It's a very good sign of actually bearish movement or development in the Nifty, right? Now this is how the price looked. You know, price looks pretty much under stress, in the grip of bear. Now let me explain you the same thing with the help of option chain. This is Nifty's option chain. What I want to do, I have put the end of month option chain. What I really want you to do, each of you, please, I'm saying there are roughly about 3 to 4,000 or 5,000 views on each video. I want you to write, each of you, 4,000, 5,000 people who are watching, just don't be a passive listener. You have to write it in the comment box, what you see on the screen. So what I really want you people to do is, do one favor to me, from 17 to 100, right? All this white part, आज के दिन कितना ऑप्शन में चेंज हुआ है, राइट? दैट इज व्हाट यू विल बी राइटिंग डाउन बाय एडिंग अप ऑल ऑफ इट from 17,200 to 17,600 or 700. You're going to take 500 points move and find out how much call option has been written today. Similarly, on the put side, you're going to add up all of this put side till about 16,700. यहाँ तक आप सारे put options को आज जो राइट हुए हैं उनको आप लिखोगे और ऐड करोगे। उसके बाद आपको जो दूसरा पॉइंट करना है वो ये कि कॉल, टोटल पुट लेके फिर पुट कॉल रेशियो निकालना है। टोटल पुट एंड टोटल कॉल, उनका रेशियो निकाल के आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। Each of you have to write it down, right? I'm not going to make comment public until everybody writes it, because otherwise you'll copy each other's answer, right? So I'm not going to let you cheat. Please do your own work. All of you need to write down, understand, and then write it out. So you can see from here, massive call writing, put writing is negligible. I want to hear the ratio, exact ratio. So 17,200 to 17,700,
you will add up all the call writing that happened today. Similarly, 17,200 below till 16,700, all the puts you will add up which have been written today, right? And then you will find out the ratio. So that is your first homework, right? Now, looking at this, what I can tell you, Nifty's stance looks bearish to me. अब बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, राइट? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ बैंक निफ्टी फॉर यू. हियर इज बैंक निफ्टी, राइट? सो बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो आज, not that it gave a gap down opening, it didn't give a massive gap down opening, rather थोड़ा gap up opening ही दी थी और वहां से बैंक निफ्टी नीचे आई है मैसिवली, ऑलमोस्ट लाइक 600 पॉइंट्स का ड्रॉप आया है. Now Bank Nifty stands on a very crucial juncture, right? कहाँ पे खड़ी हुई बैंक निफ्टी? 36,000 के नीचे जाते ही इसमें I will expect it to go down at least from this place, at least to come down to 35,000. That is what my expectation from Bank Nifty will be in case there is a gap down opening on Monday, right? So let's just have a look at the Bank Nifty's shorter time frame and see what is happening. अगर आप notice करेंगे तो Bank Nifty really gave a very smart move on Thursday, and today it gave a gap down opening, right? आज जो सुबह इसने ओपनिंग दिया है फ्राइडे को, वो एक गैप डाउन ओपनिंग थी और उसके बाद वो गैप कभी फिल नहीं हुआ और कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी kept on going in the downward direction, right? Now this is a very strong support zone, right? Notice this place is a very strong support zone. Now this support zone, if it is broken, right, either by in the live market or by opening itself, I am expecting definitely 1,000 points drop, right? And इस चीज को मैं कैसे इतने दावे के साथ कह रही हूँ, उसके लिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर और वहां पे बात करते हैं कि क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में. आप देखेंगे तो बियर्स ने बहुत जबरदस्त एक प्रेशर बना के रखा हुआ है, ह्यूज कॉल राइटिंग, राइट? I'm very much, like whenever I see in the money call writing, right? Why somebody would like in the money call options? जब उनके पास एक श्योरिटी होगी, वो भी कितने ज्यादा वॉल्यूम्स आज ऐड हुए, राइट? अगर किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कोई खास इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तभी वो इन द मनी में जाके कॉल राइटिंग करेंगे. सो यहाँ से आपको अगेन माय सजेशन टू यू विल बी कि 36,000 से लेके 36,900 तक आप सारी कॉल्स को ऐड करिए बैंक निफ्टी में. उसी तरह on the lower side also from 36,000 you can add up till 36,500 all the put options, right, which have been added today, and from there you can find out call and put ratio, right? Put and call ratio you can find out, and you can make up from there what is happening in Bank Nifty. Is it bearish stance or the bullish stance? Going with a view in the market is very important. So suppose आप आज for example अगर आज आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक व्यू के साथ आते हैं कि आपको बाय करना है कि सेल करना है, you would have sold on rise, right? I'll show you Nifty. Many times you must have heard people saying sell on rise, right? So what does it exactly really mean? So see here, यहाँ पे आके निफ्टी को एक रेजिस्टेंस लग गया, almost like starting from 11:15 to about 1:30, 2 घंटे का रेजिस्टेंस लगा है और उसके बाद निफ्टी ने इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है नीचे की डायरेक्शन में. So this is what is called sell on rise. Every time Nifty goes up on certain levels, sell on rise. जैसे निफ्टी ऊपर जाती है, ऊपर से शॉर्ट करो, right? And this resistance was broken and Nifty fell down. Now if Nifty goes further down, the first target is going to be 17,100, next target is going to be 17,000, and the last target going to be 16,850, right? तो 3 टारगेट मैंने आपको दिए हैं, 17,100, 17,000 and 16,850, right? These are going to be the targets on the lower side for Nifty. So please, again, I'm again requesting you, please write down whatever I have asked you. Nifty का put call ratio लिखिए और बैंक निफ्टी का put call ratio लिखिए. निफ्टी का 500 पॉइंट ऊपर नीचे, राइट, एंड बैंक निफ्टी का 700 पॉइंट ऊपर नीचे आपको लिखना है. आप लिखेंगे, आप समझेंगे, अपना एक माइंडसेट बनाएंगे, उसके बाद आप ट्रेड करेंगे, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपने मेरे साथ पैसे बनाए हैं लाइव ट्रेडिंग में या फिर आपने मेरे साथ पैसे बनाए ऑन माय रिसर्च, प्लीज गिव अ थम्स अप and like, share and subscribe, and please
tell your family members, friends to join me Trading View for live trading. I'm super active on Telegram from morning till evening, and it'll be my pleasure to have you on my Telegram channel, and so that you can use my highly accurate research to make some money. All the best. Take care. See you in the next video.